Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, in today's class we are going to start a really informative and interesting essay, Why Boys Fail in College. The title of the lesson is self-explanatory. The writer is going to bring forth various reasons of the failure of the boys in their college life. Now, before we proceed with the essay, let's talk about the author first. This essay, Why Boys Fail in College, has been written by Herbert Edwin Hawkes. Herbert E. Hawkes was born in 1872 and he died in 1943. The author was an American mathematician and he was also an experienced educationist. All through his life, he remained attached with the field of education, and he served as Dean of Columbia College for a period of 25 years. And this was the longest period for a dean's tenure. That is why he earned the title of the Dean of American Colleges Deans. Now, he wrote a very famous book, College, What's the Use? And this lesson has been taken from this book, College, What's the Use? Since I told you that this author, he remained attached with the field of education all through his life, so अपने personal first hand knowledge की base पे writer ने उन various causes को point out किया है जिनकी वजह से boys college में fail हो जाते हैं. In the starting paragraph, first of all, the writer categorizes the boys who fail in their college life into two different groups. Let's see what are those groups. One is those who try. Now you see, there can be students who fail in their college life, although they make their efforts, they put their efforts into the work and they study, they spare hours for study, but even then, because of one reason or the other, they fail in their college life. Now under this category, those who try, there come certain causes, and then into the second group, those who do not try. Now why don't they try? Are they lazy? Are they angry? Or what's the reason behind that? Are they foolish? There can be certain causes there. So under these headings, we will discuss 7 different causes of failure that has been mentioned by the writer. So first of all, you need to understand that the writer has divided all those boys who fail in their college life into 2 groups. And what are they? Those who try and those who do not try. Now let's see what reasons come under this heading of the boys who try, means who spare their time for studies, who give priority to the studies, but even then there is some problem, there is some hurdle, there is some reason there because of which they fail. इसमें सबसे पहली कॉज है नर्वस हैबिट्स की, इसी को हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं. नर्वस हैबिट्स की वजह से स्टूडेंट्स जो स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर सकते अपनी अटेंशन, और इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं. इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. The second cause is problem of physical and mental health. Physical या mental health के problems की वजह से, ailment या sickness की वजह से students cannot put their efforts as they should, और इस वजह से वो fail हो जाते हैं. Another problem is that of financial crisis. In those cases where the parents do not have enough resources और students अपनी studies के लिए expenses को पूरा करने के लिए उनको खुद मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से उनकी पढ़ाई के ऊपर असर पड़ता है और वो फेल हो जाते हैं. सो आपने देखा ये जो 3 कॉजेज़ हैं, नर्वस हैबिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये इस कैटेगरी में आते हैं वेयर जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एफर्ट्स के बावजूद भी पास नहीं हो पाते और फेल हो जाते हैं. अब हम दूसरी कैटेगरी को देखेंगे, दैट इज़ द बॉयज़ हु डू नॉट ट्राई. और उनके ट्राई ना करने की, मेहनत ना करने की क्या वजूहात हो सकती हैं. इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेकन एम्बिशन का इसकी एक कॉज है. एम्बिशन आप सबको पता है, गोल को कहते हैं. नाउ सिंस दीज इन द कॉलेज लाइफ, दीज आर द करियर बिल्डिंग ईयर्स, और इसमें देयर कम्स द क्वेश्चन ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन. यहाँ पे अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की चॉइस के दरमियान क्लैश आ जाता है तो ये प्रॉब्लम अराइज कर जाती है मिस्टेकन एम्बिशन की वजह से. और अनॉयंस की वजह से जब बॉयज़ को फोर्स कर दिया जाता है वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पे जो उनकी चॉइस के नहीं हैं, जो उनके डिसलाइक के कैटेगरी में आते हैं, तो वो फिर उसमें अपनी एफर्ट्स नहीं करते और फेल हो जाते हैं. एज अ रिज़ल्ट, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ अनदर वेरी कॉमन कॉज ऑफ फेलियर. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी स्कूल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कॉलेज में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो फेल हो जाते हैं. अनदर कॉज इज़ अनड्यू इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़.
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और उस कोर्स स्टडीज़ को कैसे बैलेंस किया जाना चाहिए, इसको हम इस कॉज को डिस्कस करेंगे, तो फिर हम इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे. एंड द लास्ट कॉज मैंशन बाय द राइटर इज़ दैट ऑफ लेजी ब्लफर्स. सो इन सारी कॉजेज़ को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है आपके लिए, दैट नॉट ओनली द राइटर हैज़ मैंशन द कॉजेज़, बल्कि उसने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ ऐसी सजेशंस और रेमेडीज़ भी हमें बताई हैं जिनके थ्रू हम इन कॉजेज़ को ओवरकम कर सकते हैं और फेलियर से बच सकते हैं. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. वी विल कंटिन्यू विद द कॉजेज़ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.